देख सकते हैं ये हैंड ड्रिल मशीन है और आज मैं आपको इसका डिसमेंटल करके बताऊंगा। इसका प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसमें ड्रिल फंसाते हैं और लोड देते हैं तो ये आइडल घूमने लगता है, मतलब आपका ड्रिल नहीं होगा। तो कहाँ प्रॉब्लम है इसको खोल के आज मैं चेक करूँगा। देखिए एक चीज़ देख रहे हैं, देखिए घूम रहा है, लेकिन जब इसको पकड़े हुए हैं तो देखिए चलाने से वो नहीं घूमेगा। देख रहे हैं ना, नहीं घूम रहा है। छोड़ने से थोड़ा घूम रहा है, लेकिन जैसे लोड पड़ेगा वो घूमेगा नहीं। तो इसको आज डिसमेंटल करके देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। जब ये आइडल घूमेगा तो ड्रिल आपका नहीं होगा, तो जब ड्रिल नहीं होगा तो ये बेकार हो जाएगा। इसीलिए देखते हैं इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। इसको खोल के देखना पड़ेगा। देखिए इसका हेड पार्ट है। आइए इसको खोलते हैं, डिसमेंटल करते हैं। First of all, we have to lose all the screws from machine with the help of screwdriver. Look at. For cleaning purpose, you have to keep a little amount of diesel and jute at that place for proper cleaning. It was not working properly after giving load. That's why we have required to dismantle it. Look at and enjoy this video. How we dismantle this hand drill machine. Now you can see its inside view, gear part and body part. Now we take it out, the inside part, whose color is white. Look at clearly. Finally inside part is in our hand. Look at and find where is the problem, why it was not drilling properly. Look at, this is the taper roller bearing. That is not taper, its position is taper, and it is not rubbed. That is okay. Bearing also okay. Look at the gear where that no, this side it is rubbed. Yes, it has problem. That's why it is not moving properly. Gear is okay, and there yes, it is okay, and its inside part is also rubbed. And you have to change gear also, or inside shaft also. Problem is found, and at last we fitted it as like before, and hand over until a spare part is coming. Let's check after fitting current is coming or not. Tight all the screws with the help of screwdriver properly. Now look at how I'm drive the screwdriver. How you feel to see this video? Tell me in comment. Have a nice day. Goodbye. Enjoy your day.